Students, today I will deal with you about the atmospheric carbon dioxide fixation in plants. The CO2 fixation in plants is totally light independent process, and that means for CO2 fixation light is not necessary. The plant is divided into two categories, that is C3 plants and C4 plants, on the basis of the stable product formed after CO2 fixation. In C3 plants, after CO2 fixation, the first stable product formed is 3 carbon containing compound, that is phosphoglyceric acid, whereas in C4 plants, the first stable product after CO2 fixation is 4 carbon containing compound, that is oxaloacetic acid. And the enzyme responsible for the CO2 fixation is the Rubisco, which is the most abundant protein found on the earth. Rubisco has dual property, that is, it can fix carbon dioxide as well as oxygen on the basis of the concentration of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. You people know that the concentration of carbon dioxide in atmosphere is 0.03%. And as the concentration of carbon dioxide increases, the rate of photosynthesis decreases because stomata close down. As the CO2 concentration increases in atmosphere, the stomata close down and the entry of CO2 is inhibited. The Rubisco, the first enzyme which is responsible for the fixation of CO2 is Rubisco, which is present in C3 plants, whereas in case of C4 plants, there are 2 enzymes which is responsible for the fixation of CO2 is the two enzymes are responsible for CO2 fixation in C4 plants. The first is PEP carboxylase and the second is Rubisco. Now we come to the C3 cycle, which is found in C3 plants. You people know there are 2 types of cycles, that is C3 cycles and C4 cycles. In C plants, only C3 is the cycle. This is C3 cycle, which is found in C3 plants, and it is also known as the Calvin cycle. In this cycle, the first CO2 acceptor is ribulose 1,5,5 biphosphate, which is 5 carbon containing compound. It combines with CO2 in presence of Rubisco enzyme and converted into 3-phosphoglyceric acid. This 3-phosphoglyceric acid is 3 carbon containing compound. This 3-phosphoglyceric acid is converted into 1,3-biphosphoglyceric acid with the help of enzyme phosphoglycerokinase, and here ATP is converted into ADP, and this 1,3-biphosphoglyceric acid glyceric acid is converted into 3-phosphoglyceraldehyde with the help of enzyme triose phosphate dehydrogenase, and this is a reduction reaction. Here NADPH2 is converted into NADP, and then this 3-phosphoglyceraldehyde is changed into dihydroxyacetone phosphate. This is again 3 carbon containing compound, and this reaction is a reversible reaction, and this reaction takes place with the help of enzyme triose phosphate isomerase. And this dihydroxyacetone phosphate, one molecule of this dihydroxyacetone phosphate and one molecule of this 3-phosphoglyceraldehyde combines and forms fructose 1,6-biphosphate, which is 6 carbon containing compound, and the one molecule of this fructose 6-phosphate biphosphate and one molecule of this 3-phosphoglyceraldehyde combines and forms erythrose 4-phosphate and xylulose 5-phosphate, and this fructose 1,6-biphosphate is again converted into fructose 6-phosphate, and this 6-phosphate and this fructose 6-phosphate combines with this to form this xylulose and erythrose, and the erythrose is 4 carbon containing compound. This erythrose 4 carbon containing compound combines with dihydroxyacetone 3-phosphate and forms 7 carbon containing compound, that is pseudohaptulose 1,7-biphosphate, and this pseudohaptulose 1,7-biphosphate is converted into pseudohaptulose 7-phosphate, and this is 7 carbon containing compound, and this
pseudohaptulase, one molecule of this pseudohaptulose combines with one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde and forms one molecule of ribose 5-phosphate and one molecule of xylulose 5-phosphate, and this ribose is converted into ribulose 5-phosphate with the help of enzyme phosphoribose isomerase, and this xylulose 5-phosphate is again converted into ribulose 5-phosphate with the help of enzyme ribulose phosphate epiparase, and this ribulose 5-phosphate is next converted into ribulose 1,5-biphosphate with the help of enzyme ribulose kinase, and here ATP is converted into ADP, and this is the total cycle of the cycle, Calvin cycle, and in this cycle we know that there is the compound formed is a 3-carbon containing compound, that is phosphoglyceric acid, and phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate, and the 4-carbon containing compound, that is erythrose 4-phosphate, and 5-carbon containing compound, that is xylulose and ribulose and ribose, and the 6-carbon containing compound, that is fructose 1,5-biphosphate, and 7-carbon containing compound, that is pseudohaptulose. And this is about the Calvin cycle, and which is found in the C3 plants, and the enzyme responsible for this CO2 fixation is the rubisco. ये C3 साइकिल है, और C3 साइकिल जो है कि C3 प्लांट्स में पाई जाती है। C3 प्लांट्स में जो साइकिल रन करती है उसमें जो पहला CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू इसमें पहुंचता है तो ये रिबुलोज जो है इस CO2 के साथ कंबाइन करता है। ये रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो है 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इस CO2 को लेके वो 6 कार्बन बन जाता है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। लेकिन यह 6 कार्बन वाला कंपाउंड न बन के 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो जिसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो रुबिस्को होता है, और ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है फिर वो चेंज होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि एक फॉस्फेट से एक फॉस्फेट और अटैच हो गया तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, और यहाँ एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो गया एडीपी में। और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है जिसके प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, ये स्टेप होता है, वो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज है। ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है अब वो कन्वर्ट होता है, बदलता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और ये एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसके लेके एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है और ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, और यहाँ पे NADH2 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो कन्वर्ट होता है NADP में। इसके बाद ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। लेकिन ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप है, और इसमें जो एंजाइम है वो ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज है। अब यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तक जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सारे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मिलके ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं, जो कि फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है। ये फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है वो फिर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोकाइनेज। अब ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फ्रक्टोज है वो एक मॉलिक्यूल ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसके साथ कंबाइन करता है, तो टोटल 9 कार्बन हो जाते हैं, जो कि ब्रेक होते हैं एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको कि एरिथ्रोज फॉस्फेट में, और एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में। हाँ, ये एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, फिर एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसके साथ जुड़ता है, और 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वाला 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है सीडोहैप्टुलोज 17-बाइफॉस्फेट। ये सीडोहैप्टुलोज 17-बाइफॉस्फेट फिर बदल जाता है सीडोहैप्टुलोज 7-फॉस्फेट में। ये 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ जुड़ता है, तो टोटल 10 कार्बन हो जाते हैं, जो कि 2 कंपाउंड में ब्रेक होते हैं, 2 कंपाउंड बनाते हैं 5 पर कार्बन कंटेनिंग। एक है
राइबोस 5 फॉस्फेट और एक जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। और ये राइबोस भी जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, एंड जाइलोलोज भी कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। दिस इज ऑल अबाउट कैल्विन साइकिल, दैट इज C3 साइकिल, विच इज जो कि C3 प्लांट्स में पाया जाता है। वी कम टू द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से वहाँ पे C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों पाई जाती है, क्योंकि लीफ की जो एनाटॉमी है C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की एकदम डिफरेंट है। अब हम C4 प्लांट्स में जो है लीफ एनाटॉमी जो एक स्पेशल टाइप की पाई जाती है, जिसे कि हम क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रही है। यहाँ की लीफ एनाटॉमी में दिस इज द वीटीएस ऑफ C4 प्लांट्स लीफ, ये एपिडर्मिस है, एंड दिस एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय मेसोफिल सेल्स, और ये यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है। ये वेस्कुलर बंडल जो है दैट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स जो है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि C3 प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट की तरह होते हैं। यहाँ पे जो बंडल शीथ है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, लेकिन इसमें ग्रैना जो होता है वो एब्सेंट होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड भी एब्सेंट होता है। फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होने की वजह से इन्हें NADPH2 के लिए, जो कि रिड्यूसिंग पावर है CO2 फिक्सेशन के में ज़रूरत होती है, उसके लिए ये मेसोफिल सेल्स पे डिपेंड करते हैं, और जो कि बेसिक डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे दो तरीके के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं CO2 फिक्सेशन के लिए। जो मेसोफिल सेल्स है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, दैट इज, और यहाँ पे जो है CO2 फिक्सेशन का जो CO2 एक्सेप्टर है वो है ये रिबुलोज बाइफॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे दूसरी साइकिल रन करती है, मेसोफिल सेल्स में जो साइकिल रन करती है वो C4 साइकिल है, जबकि बंडल शीथ में सेल्स में जो साइकिल रन करती है वो C3 साइकिल है। इस तरीके से हम देखें तो C4 प्लांट्स की लीफ में जो है C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों पाई जाती है, और दोनों जगह मेसोफिल सेल्स में CO2 फिक्सेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम है, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, जबकि बंडल शीथ सेल में CO2 फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है रूबिस्को। एंड दिस इज द मेसोफिल सेल्स chloroplast, and this is a vascular bundle showing xylem and phloem. Here the xylem and phloem, and cells of bundle sheath cells. This is the cells of bundle sheath cells, and this is a special type of chloroplast, and ये एकदम डिफरेंट है मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट से। and this is the stomata showing the here from where the CO2 enters. Now we come to the C4 cycle, which is known as Hatch and Slack cycle. ये पिक्चर है C4 साइकिल की। यह मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट है और ये बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर करता है तो यहाँ पे इसका जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है, दैट इज फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड है, दैट इज पेप। और ये पेप जो है इस 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये CO2 के साथ बाइंड करके ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसमें बदलता है। एंड द एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो है पेप कार्बोक्सिलेज, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहाँ पे NADH2 जो रिड्यूसिंग पावर है वो चेंज होता है NADP में, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इसमें भी एस्पार्टिक एसिड में भी चेंज हो सकता है। ये मैलिक एसिड जो है जो बनता है ये जब ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में। ये बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद ये मैल्विक एसिड जो है वहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, ये CO2 जो है वो यहाँ के बंडल शीथ में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है और रिबुलोज होता है। दिस इज
रिबुलोज दैट इज 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ के फिर ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाता है, और ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फिर अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है, तुरंत ही ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और यहाँ पे ये जो है फिर ये C3 साइकिल दैट इज अ कैल्विन साइकिल ये रन करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो C4 प्लांट्स की लीव्स होती है उनके मेसोफिल सेल्स जो होती है उसमें जो है वो C4 साइकिल रन करती है, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है CO2 फिक्सेशन के बाद वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इसके बाद जो है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जब ये ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ में तो यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये जो CO2 रिलीज होता है ये CO2 बैक ना होके बाहर ना निकलने के बजाय ये क्या होता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम होता है और रिबुलोज बाइफॉस्फेट इस CO2 का एक्सेप्टर होता है, उसके साथ ज्वाइन करके यहाँ पे कैल्विन साइकिल रन करती है। यानी कि बंडल शीथ सेल्स में कैल्विन साइकिल रन करती है, जबकि मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल रन करती है। तो C4 प्लांट्स में हम देखते हैं कि C4 साइकिल एज वेल एज C3 साइकिल दोनों रन करती है। प्लांट्स में जो कैल्विन साइकिल रन करती है बंडल शीथ सेल्स में वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है NADP मीडिएटेड, और दूसरी होगी PCK टाइप, और थर्ड होती है NADME टाइप दैट इज NAD मीडिएटेड। यहाँ पे जो है NADP जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर होगा, यहाँ फॉस्फोकार्बोक्सिलेज काइनेज है, और यहाँ पे जो है NAD है दैट इज नॉट NADP, and this is the cycle shows NADP type, PCK type and NADME type. The basic difference of Calvin cycle and Hatch and Slack cycle. The first is the primary CO2 acceptor is 5 carbon compound ribulose diphosphate, whereas in C4 cycle the primary CO2 acceptor is 3 carbon containing compound that is phosphoenol pyruvic acid. The second difference is the first double compound found and is phosphoglyceric acid, which contains 3 carbon atoms, and in C4 cycle the first double compound is 4 carbon containing compound that is oxaloacetic acid. The third difference is the C3 cycle is completed in only one type of chloroplast that is found in mesophyll cells, and the C4 cycle is completed in 2 types of chloroplast, that is one is occurring in mesophyll cells and other in bundle sheath cells. The next difference is that the Calvin cycle takes place at comparatively low temperature, whereas C4 cycle takes place at comparatively at high temperature and more light intensity. And in C3 plants, in Calvin cycle, the photodispersion occurs in C3 plants, whereas in C4 plants, the photodispersion doesn't occur. The rate of photosynthesis in Calvin cycle is comparatively lower, whereas the rate of photosynthesis is comparatively higher in C4 cycle. And the next is that C3 cycle occurs in C3 plants which shows normal anatomy, whereas the Hatch Slack cycle occurs in C4 plants which shows Kranz anatomy. The basic many differences in C3 plants and C4 plants. Some of them are listed here. The first one is that the C3 plants have Calvin cycle in all the green cells of the leaves, whereas in C4 plants, the plants have Hatch and Slack cycle in mesophyll cells, and Calvin cycle runs in the cells of bundle sheath cells. And in C3 plants, there is only one CO2 acceptor, that is ribulose 1,5 biphosphate, which is 5 carbon containing compound. And C4 plants, there are 2 CO2 acceptors. The first one is phosphoenol pyruvate, that is PEP, present in the mesophyll cells, and the second one is the ribulose 1,5 biphosphate, which is present in the bundle sheath cells. The third difference is that the first stable product of CO2 fixation is the 3 carbon containing compound phosphoglyceric acid in C3 plants, whereas in C4 plants the first stable CO2 fixation product is 4 carbon containing compound, that is oxaloacetic acid. The fourth difference is that in C3 plants the Kranz anatomy is absent, and the chloroplast in all green cells are
of same type or alike. They are small in size and are of normal type, and they have well defined grana, and they have both types of photosystem, that is photosystem 1 and 2. Whereas in C4 plants, the leaf shows Kranz anatomy. That is, leaves have different type of anatomy, and here the chloroplasts are dimorphic in nature, and the mesophyll cells have chloroplasts similar to those of C3 plants, but bundle sheath cells shows different type of chloroplasts which are larger in size and they lack grana. And these chloroplasts are centripetally arranged, and these chloroplasts lack photosystem second, and they have to depend upon the chloroplast of mesophyll cells for the supply of NADPH2, the reducing power. And C3 plants is the optimum temperature ranges between 10 to 25 degrees centigrade, and for C4 plants the optimum temperature ranges between 30 to 45 degrees centigrade. And the maximum light intensity for photosynthesis in C3 plants is 1000 to 1200 foot candles, whereas C4 plants can photosynthesize even at a much higher light intensity. The next difference is that the C3 plants of lesser affinity of RUVP for CO2, and the Kelvin cycle can reduce the CO2 concentration around the plants to only 50 ppm, whereas C4 plants can photosynthesize at a much higher light intensity and even full sunlight, and full sunlight is not the saturation intensity for that. And C3 plants are less efficient in photosynthesis, and the net rate of the process is only 15.35 mg per CO2 per decimeter square of leaf area per hour. And C4 plants are more efficient in photosynthesis. The net rate of the process is 40 to 80 mg of CO2 per decimeter or square leaf area per hour. And the next difference is that in C3 plants, oxygen has an inhibitory effect on photosynthesis, but in C4 plants, the oxygen does not have any inhibitory effect on the process. The last difference is that in C3 plants, photorespiration occurs, which further reduces the photosynthetic yield, whereas in C4 plants, the photorespiration is absent, and therefore the efficiency of photosynthesis is further increased.